every step of the way. Even on the D-Day, catch us live on 11th of December 2022, where we will provide you detailed ALIT analysis, expected cutoffs, paper pattern, and much more. So why wait? Join us live on 11th of December 2022. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hi everyone, very good evening and welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma and this is our important RC question series. And we are going to revise the last 6 months' most important editorials that you should be reading. I hope I'm clearly audible and visible to everyone. In the app, Akshay, if you could confirm that I'm clearly audible and visible as well as on YouTube. If everything's good, we shall commence with the session. I hope you had seen my yesterday's class that happened at 9, where I had brought 4 passages for you. I'm glad you're back, Priya. And we discussed 4 passages. ये वो passages basically ये वो editorials थे जो बहुत सारे sources में आए थे और last 6 months में ये appear हुए हैं और ये आपको पढ़ना जरूरी है. And simultaneously जब हमने वो passages पढ़े, there were main idea questions there. तो आज भी वही चीज है. I have 4 important editorials. उस पे मैं मेन आइडिया क्वेश्चन तो लेके आई हूँ, बट क्योंकि लास्ट क्लास में yesterday some of you were requesting me to get the tone question, मैं टोन क्वेश्चन भी लेके आई हूँ और बहुत क्लोज ऑप्शंस लेके आई हूँ. ठीक है, तो बिल्कुल अनस, बिल्कुल पढ़ के जाओ. अभी वाला टाइम बहुत जरूरी है पढ़ाई करने के लिए, बट एक दिन पहले तो क्या ही पढ़ाई कर लोगे. मेरे हिसाब से तो एक दिन पहले, एक रात पहले, दिन में पढ़ लो बट रात को you just have a nice sleep, good food, listen to some good music, and that's all. Otherwise, I'm going to share a short video with you later on. You can watch that to know what you're supposed to do on the last date. ठीक है, तो मेन आइडिया क्वेश्चन भी है, बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, और साथ में टोन क्वेश्चन भी है, बहुत क्लोज ऑप्शंस है टोन में. तो ये दोनों क्वेश्चंस चारों पैसेजेस में हैं. आपको बहुत केयरफुली वो क्वेश्चंस का आंसर करना है, बहुत केयरफुली सोचना पूरा पैसेज क्यों लिखा है. ठीक है, तो यू वेलकम सिजान. अच्छा, दूसरी चीज, आज मैं 2 पीडीएफ्स शेयर करूंगी, मेरी वीडियो टीम शेयर करेगी 2 पीडीएफ्स. सो 4 passages in the class, 10 more passages through the PDFs. But did you read the first PDF and the article that I had shared with you yesterday? Other people who don't know what the PDF is that I'm referring to, this PDF has important articles in the last 6 months जो आपको जरूर पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 साल से मेरे बताए हुए पैसेजेस आ रहे हैं एग्जाम में, टॉपिक्स आ रहे हैं एग्जाम में. वेरी लाइकली इस साल भी आ जाना चाहिए, आई एम अज्यूमिंग. और अगर ये हो गया तो आप रिग्रेट करोगे अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो. आई एम श्योर आपने कल वाला पढ़ लिया होगा पैसेजेस दैट हैड 5 पैसेजेस. आज 2 पीडीएफ शेयर करूंगी. ठीक है, अपकमिंग क्लासेस जो मेरी हिंदू एडिटोरियल क्लास होगी उसमें भी शेयर करूंगी. तो ऐसे मैं आपके लिए मतलब ग्रेजुअली कुछ पीडीएफ्स 5 पैसेजेस के शेयर करते जाऊंगी. ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी अक्षय, दीज पीडीएफ्स आर शेयर्ड ऑन द यूट्यूब क्लास दैट्स गोइंग ऑन लाइव. तो अक्षय इसको डाउनलोड, ऐप में नहीं, यूट्यूब में. तो अक्षय उसको डाउनलोड करने के लिए कल वाला वीडियो एक बार फिर से खोलो, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है पीडीएफ. जिसने भी डाउनलोड नहीं किया वहां से डाउनलोड कर लेना इसको. और आज का पीडीएफ भी within the next 5 minutes it will be uploaded under my video in the description box and will be shared in the chat box as well. ठीक है, I hope it's the same for ALET and CLAT both. In fact the same goes for SLAT, जामिया, BHU, सारे एग्जामिनेशंस के लिए. ठीक है, क्वेश्चंस नहीं है कसक, इतना ही मिलेगा इतना में. ठीक है, तो इतना पढ़ के चले जाओ, वो भी बहुत है आपके लिए. स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में. ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, ओ वेट, गिव मी अ सेकंड. हियर वी गो. एजेंडा क्या है? 4 पैसेजेस पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेस से. आज कुछ पैसेजेस हिंदू से लेके आई हूँ, कुछ पैसेजेस स्क्रोल से लेके आई हूँ, कुछ पैसेजेस टेलीग्राफ इंडिया से भी लेके आई हूँ. स्क्रोल से आपने देखा होगा सैंपल पेपर्स में बहुत सारे पैसेजेस आए थे, तो आज मैंने 2 पैसेजेस स्पेसिफिकली स्क्रोल से लिए हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है. कल का लास्ट पैसेज याद है इडली पे? आज भी फूड पे एक पैसेज लेके आई, बट नॉट एज फनी एज द वन ऑन इडली, बट यस फूड पे है बिकॉज दैट्स माय फर्स्ट लव.
उसके मेन आइडिया क्वेश्चन आंसर करेंगे प्लस टोन क्वेश्चन से। बहुत ध्यान से पैसेज पढ़ना, ये दोनों क्वेश्चन जरूर आएंगे दोनों पैसेजेस, चारों पैसेजेस में जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीडीएफ ऑफ 10 more articles will be shared today. 2 PDFs. My video team is going to share it. ठीक है. Now, before I commence with the first article with you, we've launched our test series. You still hi Mudita. Good evening. And ठीक है, so we have time if you still want to enroll yourself for this test series. The details are there under my video in the description box. Here you go. First page. Read this and send me a done. याद रखना मैंने आपको मेन आइडिया ढूंढने का तरीका कैसे बताया था. Apply this here. All the best. Umaid, I'll tell you. Please read this passage first. Let me reduce the size of my picture. बताऊंगी कहाँ मिलेगा, पढ़ लो पेज प्लीज. मुझे नहीं पता अक्षय, गैस करो. I'm sure you're done reading this page. ठीक है, let's go to the next page everyone. Page number 2. I do, Arzu. Also, I'll tell you why have I been taking so much on food. You remember the sample paper, the Roshogola passage of how he was very happy during the lockdown. He's going to go sell his Roshogolas. That's where I get the cues from on food. Next page, everyone.
चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज. I have hidden the title of the passage. What follows is a main idea and a tone question. Okay, now let me make your life a little more difficult. Here is your main idea question, and I'm going to add another option here. Have fun. Choose your correct answer here. Firni pulao, idli, ma'am is going crazy. लक्ष्य पहले क्वेश्चन आंसर कर लो बच्चे, फिरनी भी खिलाएंगे तुमको. क्वेश्चन आंसर बताओ. व्हाट्स द करेक्ट आंसर हियर? D, B, D, B. B says Dwarkanath deserves to be famous because of the influence he has had all over the world. When you say he deserves to be famous, that means he is not famous and probably not as famous as he deserved. Okay, alright. A says Dwarkanath was the Tagore who made Bengali food popular, not Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore ने famous नहीं किया, Dwarkanath ने किया popular. अच्छा. She says influence ran in the blood of Tagore's. द्वारकानाथ ने अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया कंट्री को फूड के सेंस में, रविंद्रनाथ टैगोर ने अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया कल्चर के सेंस में. Yeah, C is a bad option. C is a bad option, my kids. C cannot be true. एक बात बताओ, let me reiterate it. एक जब भी कंफ्यूजन हो ना, अपने आप से पूछो, why has the whole passage been written to show कैसे टैगोर influential रहे हैं from रविंद्रनाथ to द्वारकानाथ. अगर आप फूड की बात ही नहीं कर रहे हो तो क्या ये ऑप्शन मेन आइडिया हो सकता है? पूरा पैसेज फूड पे डिपेंडेंट था. अगर आपने फूड की बात ही नहीं करी तो ऑप्शन सी आपका आंसर कैसे हो सकता है बच्चे? थोड़ा सोच के बताइए मुझे. Exactly, Mudita. So C is eliminated, right? ठीक है, अब आगे बताइए. फिर से केयरफुली चूज किए अपना आंसर. पूरा पैसेज क्या बताने के लिए लिखा है? लक्ष्मी सेज डी, शुभम सेज डी, देवीना सेज डी. ठीक है, and many people, Mudita in the app as well says D. Our correct answer here is going to be a D. Although I might have loved if this option had a little more detail. Although see, this is the best out of the lot. I'll tell you why. So we're referring to Dwarkanath. The passage started with Rabindranath, but then passage is not about Rabindranath. If I ask you about two important words,
that define the entire passage. It is food and Dwarkanath. Your options need to have these two words. Only then is going to be the correct answer. ठीक है? Exactly, Alifia. And the same technique will help you find out D. Although I would have loved if option D had a few more words, making it a little more elaborate, but it's the best out of the lot. It has Dwarkanath, it has food, it has influence. The influence reached to the main sahibs who used to go to England. They would carry curry powder, curries and different things. ठीक है, तो याद करो मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाए थे. मैंने आपको दो टेक्निक सिखाए थे. एक बिगर पिक्चर और दूसरा टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स. If there are still people in the class who haven't seen these videos, you just have to go to our channel, open the home page. There are many videos that I've taken on main idea. Just need to watch it. Let's continue with the tone. Here you go. अब टोन बताइए मुझे बहुत ध्यान से, carefully. Yes, Arzu. Thank you. Very good, Mudita. Thank you, Debadrata. You're welcome. कसक वापस जाके समझाती हूँ एक क्यों गलत है. दोनों वर्ड्स हैं बच्चे लेकिन बहुत नैरो है वो. मैं बताती हूँ क्यों. बस मैं इसलिए नहीं लेके आना चाहती ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि ये तुम सब ना यूनानिमसली आंसर कर देते हो और मुझे कोई सैडिस्टिक प्लेजर मिलता ही नहीं है इस चीज से. मुझे मजा ही नहीं आता ऐसा क्वेश्चन करवा के. सबने यूनानिमस आंसर कर दिया है. ऐप में भी सबका आंसर सेम है. मुझे खेलना ही नहीं है ये गेम. हम इसको पार कर देते हैं. इसका आंसर एब्सोल्युटली ए है. ठीक है, ऑफ कोर्स ए है बिकॉज ये ना बहुत सारे ये कहानी सुना रही कि कैसे दुर्गादास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द्वारकानाथ, सॉरी, द्वारकानाथ का जो पूरा जर्नी था, his love for food, his travels abroad, still what was the kind of food he liked, what kind of food made him popular, what was the food cooked in his kitchen, what was his last meal, and even after his death, food that was associated with his own personality. ठीक है, so option A इसलिए गलत है because द्वारकानाथ was the Tagore who made Bengali food popular, not रविंद्रनाथ. पैसेज में कंपैरिजन नहीं है द्वारकानाथ ने पॉपुलर बनाया रविंद्रनाथ ने पॉपुलर बनाया. पैसेज उसके बारे में नहीं है बच्चे. दैट्स व्हाई ए इज रॉन्ग. ठीक है, तो पूरी पैसेज स्टोरी टेलिंग है. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ए फॉर दैट क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं. ठीक है, और by the time I show kids the next passage, Shivani from the video team, can you please share the two PDFs with the kids in the chat box right now? Thank you. Here you go with the next passage. But before I show you the next passage, one, our test series has been launched. You still have time. You can still enroll yourself for this program. Our tests are very accurate, very close to the actual examination. Know more about the program by clicking at the link under my video in the description box. Here you go with the next passage. Shivani, could you please share the PDFs with the kids? Here is our second passage. Read this and send me a done. Ah, here you go. Thank you, Shivani. Debadrata after this passage. Yes, Anisha, I'll answer your question after the passage is done.
Next page. Done, everyone? Next page. Here you go. Yes, Nikta. Yes, Nikta. I think the internet buffered a little. Looks fine now. Next page. Rachin, let's check out the next question. You'll find close options there. I'll teach you a trick. Okay. So now the next question is not the main idea question. It's the title of the passage question, which is exactly what the main idea is. Just that it could be a little more concise than the main idea. So you're supposed to answer a title of the passage out of the options we have. Little more concise, but very close to the main idea. Choose one. Sishan says A. Okay. D. In the app, A, Mayank. Acha, okay. A, C, D. Acha, dekho, let me give you a few tricks and tips. One, how to see, there was a question
asked to me, ma'am, if the options are really close, how do I find the correct answer? It depends on the kind of question. There can be close options in inference based, tone based, main idea based. And the approach has to be dependent on the type of the question. Every question type has a different approach. Let's discuss this question. If you have a title question, it's nothing but asking you the main idea. Okay, now let's understand why has the whole passage been written. One, understand what is a fad. Fad is the in thing these days. Something very popular. Is hope the in thing these days, the fashionable thing these days? No, that's not true. And that's how we eliminate option C. Option D says making hope alive again. So there is this one person who is putting in a lot of effort to bring this language, this tribal language alive again. But how is he doing it? He's doing it through digital platforms. Probably it has not become extinct that he wants to make it alive again. Probably he's just making it known by many people because he's going on digital platforms like Facebook and Twitter, and there are other things that he was doing. So basically, the two important words, if you think, rather three important words, if you try to recollect from the main idea of the passage, that's going to be this man who's working for the promotion. Two, obviously, how, which is the main theme of the passage, and three, digital platforms. The entire passage focuses on how this man is putting in so much effort to bring this language on digital platforms. And that's exactly why the correct answer has to be an A. Okay? D, of course, he's trying to put in a lot of effort. But if we don't include this pointer, my main idea is going to be narrow. There's no competition between the two. Of course, Santali is something that's referred to multiple times in the passage, but there's no competition between the both. तो ये versus वाली चीज eliminate हो जाती है और इसलिए option B गलत हो जाता है. ठीक है? So the correct answer is going to be an A here. Now let's come to the tone question here, everyone. Here, answer क्या होगा इसका correct बताइए मुझे. Correct answer. Expository, descriptive, analytical, narrative. D. Narrative. कहानी सुना रहा है क्या? Descriptive और expository. बच्चे देखो बहुत close tones है, बहुत ध्यान से आंसर करना. The tones are extremely close. तो अब डिफरेंशिएट करते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन कैसे एप्लीकेबल होगा. ठीक है, बट बिफोर आई एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम, few things. One, hit the like button right now. I have 90 plus people live. I have barely 52 likes. किसके लिए सेव करते हो ये? I'd like to know that name. और क्या आपके पास तो फ्री में है ना लाइक, so hit the like button here. और ये डाउनलोड कर लो, देखो पार्ट 2 आ गया पीडीएफ का. Here it is. चैट बॉक्स में से डाउनलोड कर लो पार्ट 2. पार्ट 3 will also be released shortly by my video team. ठीक है, पार्ट 2 डाउनलोड कर लिया सबने. Everyone who is watching me live from the app, make sure you rate me a 5. Make sure you do that. 2, you have to download the PDFs from my YouTube channel, so you'll have to go there. Okay? ठीक है, चलो अब let's differentiate between expository, descriptive, analytical, narrative. Narrative is storytelling. ठीक है, analytical is answering why, how. Why और how आंसर हो रहा है क्या, ये बताओ मुझे. पैसेज में are we answering why and how? No, we aren't. Since why and how हम आंसर नहीं कर रहे हैं, प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. Now I'm left with two very close tones, expository and descriptive. Let's understand. Descriptive होता है सिर्फ बताना क्या हुआ. एक्सपोजिटरी होता है उसके थोड़े से इन डेप्थ एक्सपोजिंग सेंस में जाना, एज इफ आप डिस्क्राइब तो कर रहे हो लेकिन आप ज्यादा डिटेल में जाके डिस्क्राइब कर रहे हो. तो ये टोन्स, क्योंकि लास्ट ईयर
21 में I think if I'm not wrong, और या 22 में they came in the examination both of them together. You have to think क्या author थोड़ा प्रोसेस करके डिटेल में जा रहा है या सिर्फ ऊपर का उसने बता दिया ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. अगर ऐसा हो रहा है बताया है तो डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा डिटेल में जा रहा है तो एक्सपोजिटरी है. आप चूज करो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा. अब सबका आंसर ए बनने लग गया है. हाय आलोक, आंसर क्या होगा बच्चे? मयंक, शुरुचि, आंसर चेंज करना है. मयंक का आंसर ए से बी हो गया. अब ए बी, देखो करेक्ट आंसर यहां होगा ए, बिकॉज ही इज गोइंग इन, देखो सिर्फ बता नहीं रहा कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ही इज गोइंग अ लिटिल बिट इनटू मोर ऑफ डिटेल. जब वो संथली से कंपैरिजन कर रहा है और ये बता रहा है कि संथली के रेफरेंस में क्या हो रहा है, प्लस कैसे वो न्यू वर्ड्स कॉइन कर रहा है, उसके पीछे की रीजनिंग दी है उसने. सो ही इज गोइंग अ लिटिल मोर इनटू द डिटेल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. सो आई वुड चूज एक्सपोजिटरी. अच्छा आंसर नहीं है, मैं बता देती हूँ. आई वुड चूज एक्सपोजिटरी ओवर डिस्क्रिप्टिव. ही इज नॉट merely telling us, he is going into a little bit of detail, and thus the answer is expository and not descriptive. Now our 7 days Maha revision series is going on. The schedule is